Okay, so hello students. So today we are going to learn about hydrocarbons. Okay, so let's see what do you mean by hydrocarbons. Okay, so containing hydrocarbons are the compounds containing carbon and hydrogen. Okay, are the compounds containing carbon and hydrogen. Okay, now after that the second point, हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन आपको जानना है. ओके, सो इट मींस दैट हाउ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड. सो हाइड्रोकार्बन्स are classified as saturated and unsaturated hydrocarbon. Okay, so hydrocarbons are classified as saturated and unsaturated. Now what do you mean by saturated hydrocarbons? ये भी आपको समझना है. ठीक है, चलिए वो देख लेते हैं. What do you mean by saturated hydrocarbons? Saturated hydrocarbons. Okay, so the hydrocarbons containing containing single bond. Okay, the hydrocarbons containing single bond between each carbon atom. The hydrocarbons containing single bond between each carbon atom is termed as saturated hydrocarbons. Now saturated hydrocarbon में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? We will learn about alkanes. देखते हैं अभी alkane क्या है. After that the unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. Okay, so the containing the hydrocarbons containing at least, okay, remember this point, at least, कम से कम, at least one double bond, or at least one triple bond. Okay, the hydrocarbons containing at least one double bond or at least one triple bond between the carbon atoms are called as unsaturated hydrocarbon. इट का मतलब ये है किसी भी कार्बन के स्ट्रक्चर में अगर आपको मिनिमम एक डबल बॉन्ड या मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है देन यू विल कॉल दैट हाइड्रोकार्बन एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. और इसमें हम लोग देखने वाले हैं अल्कीन के बारे में एंड अल्काइन के बारे में. क्लियर है? सो ये जो अल्कीन है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम. मतलब एक भी डबल बॉन्ड अगर कार्बन एटम्स के बीच में आ गया देन यू विल कॉल दैट unsaturated hydrocarbon as alkene. Clear? Now for alkyne, अगर कार्बन एंड कार्बन के बीच में मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया देन यू विल कॉल दैट unsaturated hydrocarbon as alkyne. I hope this point is clear. चलिए now we'll see the naming of hydrocarbons. Like hydrocarbons का naming हम किस तरीके से करते हैं. Okay, so for that what you need to remember, number of carbon atom. Okay, कितने कार्बन एटम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग the root word, and third suffix. Okay, these 3 points you need to keep in your mind while writing the name of a hydrocarbon. Okay, so number of carbon atom 1, like suppose you're writing the name of a hydrocarbon,
and if it contains only one carbon atom, then what is the root word? Okay, तो root word हो जाएगा myth. जैसे you must be knowing about methane, तो उसमें मीथेन में जो मिथ वर्ड होता है दैट इज द रूट वर्ड. ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सफिक्स? सफिक्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स जो हम रूट वर्ड के बाद लगाते हैं. एंड वो सफिक्स हमें बताता क्या है? सफिक्स हमें ये बताएगा दैट कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, या कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है. सो फॉर सिंगल बॉन्ड between the carbon atoms we use the suffix ane. Okay, this is for single bond between carbon atoms. Okay, clear? Now for double bond between carbon atoms we use the suffix ene. Means carbon carbon के बीच जब double bond होगा then we will use the suffix ene. Now for triple bond between the carbon atoms we use the suffix yne. Okay, so ये जो suffix जो root word के बाद हम लगा रहे हैं it will represent that carbon carbon के बीच single bond है, और कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है. सिमिलरली तो बेसिकली ये तीन सफिक्स आपको याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स. नाउ अगर एक कार्बन एटम आपके चेन में है तो रूट वर्ड क्या होगा? मिथ. अगर दो कार्बन एटम्स चेन में है तो उसके लिए रूट वर्ड होगा इट्स. तीन कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप, फोर कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, फाइव कार्बन एटम्स के लिए पेंट, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए हेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन NON, एंड 10 के लिए डेक यू कैन राइट. क्लियर? बेसिकली क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 कार्बन एटम्स तक फ्रेम होते हैं. क्लियर? सो अभी हम लोग देख लेते हैं अल्केन के बारे में. अल्केन मींस द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. ओके, चलिए. सो फर्स्ट विल सी अबाउट अल्केन्स. ओके, सो अल्केन्स में किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है? तो लाइक आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन अल्केन्स, so you can just write that alkanes are the saturated hydrocarbons containing single bond between each carbon atom. आप इस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हो. क्लियर है? alkanes are the saturated hydrocarbons. yes, ये पॉइंट जरूर से आप लिखोगे. क्लियर है? alkanes are the saturated hydrocarbons containing single bond between each carbon. पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय अल्केन. क्लियर? सेकंड पॉइंट, जनरल फॉर्मूला. ओके, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपसे पूछेगा. ओके, सो जस्ट यू रिमेंबर वन पॉइंट फॉर व्हाइल राइटिंग द जनरल फॉर्मूला. सो विल राइट इन दिस मैनर CN. नाउ n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी डिसाइडेड. लाइक अगर एक कार्बन एटम है तो हाइड्रोजन का एक फिक्स नंबर होगा. अगर दो कार्बन एटम्स है तो हाइड्रोजन का एक फिक्स नंबर होगा. तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बताया गया है CnH2n+2. बट आप इसे कैसे याद रखोगे? कार्बन का नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए 2n+2. इट मीन्स कार्बन का नंबर जितना भी होगा आप पहले उसको डबल करोगे, बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करना डबल होता है. ओके, सो कार्बन के एटम्स के जितने भी नंबर होंगे पहले आप उसको डबल करोगे और उसमें 2 को ऐड करोगे, एंड दिस वे यू कैन फाइंड द फॉर्मूला फॉर एनी अल्केन. तो जनरल फॉर्मूला अगर आपसे पूछेगा तो यूल राइट CnH2n+2 फॉर अल्केन्स. आई एम सेइंग. चलिए एग्जांपल देख लेते हैं. लाइक इफ वी आर हैविंग वन कार्बन एटम, तो अगर एक कार्बन एटम तो एक का डबल क्या होता है? 2. 2 + 2 कितना होता है? 4. सिमिलरली अगर दो कार्बन एटम्स हैं तो 2 का डबल 4 होता है, 4 + 2 क्या होता है? 6. सिमिलरली फॉर थ्री कार्बन एटम्स, 3 का डबल 6 होता है, 6 + 2 इज 8. एंड एज यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर CH4, इसमें कार्बन का एक ही एटम है, तो व्हाट इज द रूट वर्ड? मिथ. एंड एज single bond is present between each carbon atom, so we will add the suffix ane at the end, so it will be methane. सेकंड में क्योंकि दो कार्बन एटम्स है, so we will write it
it as ith is the root word and an is the suffix. Similarly, 3 carbon atoms हैं, तो prop A N P. Understood? Similarly, we will define alkenes also and alkynes also. Understood? चलिए. Okay. So in alkenes, what you'll write? Alkenes are the unsaturated hydrocarbons. Alkenes are the unsaturated hydrocarbons having having at least one double bond between the carbon atoms. Okay. Now for alkenes also आपसे general formula पूछा जा सकता है. Clear? So the general formula for alkenes will be CnH2n. ओके दैट्स इट. आपको याद होगा अभी अल्केन में हमने क्या किया था, CnH2n+2. तो बेसिकली वहां पे जो +2 ऐड हुआ था, यू जस्ट रिमूव दैट +2. ओके, सो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला दैट इज CnH2n. दैट्स इट. कार्बन का नंबर जितना भी होगा, हाइड्रोजन का नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप उसको सिर्फ डबल कर दोगे. नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्स्ट मेंबर हम बनाए थे, लाइक अगर आप अल्केन के लिए देखोगे तो मीथेन वाज द फर्स्ट मेंबर. ओके, फर्स्ट मेंबर फॉर अल्केन. मीथेन क्या था, एल्केन का फर्स्ट मेंबर था. उसी तरीके से इथेन क्या था, दिस वाज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन. एंड सिमिलरली प्रोपेन वाज द थर्ड मेंबर ऑफ अल्केन. तो इसी तरीके से आप एक एक कार्बन को बढ़ाते जाओगे, you will keep on getting the fourth member, fifth member or the sixth member. In this order will continue. But in alkene, the first member is having two carbon atoms. Now ऐसा इसीलिए because यहाँ पे mention किया गया definition में that at least one double bond present between the carbon atoms. So अगर आपको कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को शो करना है, इसका मतलब कि आपके पास मिनिमम दो कार्बन एटम्स होने चाहिए. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. चलिए देखिए, तो फिर अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स हैं तो टू का डबल क्या होता है, फोर, तो C2H4. ओके, सिमिलरली इफ वी आर हैविंग थ्री कार्बन एटम्स, सो थ्री का डबल क्या होगा, सिक्स, सो C3H6. Similarly, if we are having four carbon atoms, so C4H8. Clear? These are the molecular formulas of the compounds. Now, if we want to write their names, so if we are having two carbon atoms, so root word क्या होता है, ith, and because double bond is present, so we will add the suffix ene. Similarly, for three carbon atoms, prop ene. For four carbon atoms, but ene. Now, this ethene is the first member of alkene. Please remember this point. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो चुके हैं, लाइक राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है that the first member of alkene is having two carbon atoms, but the first member of alkene is having only one carbon atom. Similarly, three carbon atoms, like C3H6 is the second member of alkene, and similarly C4H8 is third member of alkene. And similarly, you keep on adding one carbon atom, you will be getting the next member, fourth member, fifth member, sixth member. Okay, I hope it is understood. Now, the last one is alkyne. Okay, so what do you mean alkyne? Alkyne is again the unsaturated hydrocarbons, the unsaturated hydrocarbons having at least one triple bond, at least one triple bond between the carbon atom. Okay, the unsaturated hydrocarbon having at least one triple bond between the carbon atom are called as alkyne. Okay, so again we will write the general formula
फॉर अल्काइन। नाउ इसके जनरल फॉर्मूला को क्या ध्यान रखना है, CnH2n -2। नाउ जस्ट सी द पैटर्न, जब हमने अल्केन का जनरल फॉर्मूला लिखा था तो उसमें CnH2n +2 था। अल्कीन के जनरल फॉर्मूला में हमने क्या देखा, CnH2n, ना ही +2 ना ही -2, बट अल्काइन के जनरल फॉर्मूला में CnH2n -2। सो व्हाट्स द कॉमन पार्ट, CnH2n ये तो कॉमन हो गया, अल्केन में +2 कर रहे हैं, अल्कीन में कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं, CnH2n एज इट इज हमने उसको रख दिया है। नाउ फॉर अल्काइन CnH2n -2। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट्स। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए, सो सिमिलरली इफ वी वांट टू राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन, इसमें भी आप खुद ही बताओ हाउ मेनी कार्बन एटम्स विल बी देयर, 2 कार्बन एटम्स, बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। सो अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है देन ऑब्वियस सा बात है कि आपके पास मिनिमम 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। सो फॉर दैट इफ यू आर हैविंग 2 कार्बन एटम्स तो क्या करना है, CnH2n -2, मतलब हाइड्रोजन का नंबर निकालने के लिए जितने भी कार्बन आपके पास है आप उनको पहले डबल करो फिर -2 करो। सो अगर मेरे पास 2 कार्बन एटम है तो 2 का डबल 4 होता है, 4 - 2 इज 2, सो C2H2। इफ यू आर हैविंग 3 कार्बन एटम तो 3 का डबल 6 होता है, एंड 6 - 2 इज 4, सो C3H4। सिमिलरली 4 का डबल 8, 8 - 2 इज 6, तो C4H6। क्लियर? Now we'll write their names. 2 carbon atoms, obviously it will be named as it is the root word and suffix is YNE. Prop YNE, and C4H6 is but YNE. Clearly? Okay. So ethyne is what? It is the first member of alkyne. Similarly, propyne is what? It is the second member of alkyne, and similarly butane is the third member of alkyne. If you keep on increasing the number of carbon atoms, you will be getting the fourth member, fifth member in this order. Okay, so I hope these are the possible questions जो आपके हाइड्रोकार्बन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं. So in the next video we will cover the next topic. Okay, so thank you everyone.